Thank you so much, sir. Now may I request Shri Rajendra Bhai Thakur to felicitate our Vice President, Shri Manhar Bhai Lapsiwala, with our token of gratitude. Thank you, Rajendra sir. May I request our President, Shri Arvind Bhai Mehta and Zubin sir, to felicitate Shri Mukesh Bhai Dalal. I request Shri Rajendra Bhai Thakur to felicitate our Secretary, Shri Srivas Bhai Giwala, for his ever supportive domain. Thank you, Rajendra sir. Now may I request Dr. Zubin Master to felicitate our Co-Secretary, Shri Dheeraj Bhai Tamakuwala, for his strong counseling. Thank you so much, Veena ma'am. Now I request Dr. Zubin Master to felicitate our Treasurer, Shri Mukesh Bhai Varyava, with our token of appreciation for his versatile ideas for this infrastructure. Thank you so much, sir. Now may I request Shri Rajendra Bhai Thakur to felicitate our co-treasurer, Shri Dharmesh Bhai Tamakuwala, with our token of appreciation for his initiative in the digital framework of the school. Thank you, sir. Taking forward the event further. Prizes are a way to encourage good behavior and inculcate competitive spirit. This is the reason why our school organizes prize distribution to encourage students. So, we are here to give away the awards in categories academics, sports, and co-curricular activities. Today, I feel very privileged and honored to stand here in front of you all and acknowledge the achievements of our brilliant students who have made both the school and their parents proud. First of all, I would like to call upon Nakia Vohra, who stood first in GTTP International Research Conference 2022 London. GTTP stands for Global Travel and Tourism Partnership, which helps students to explore and understand the tourism sector. I request Shri Arvind Bhai Mehta to please give away the trophy. Can we have a huge round of applause? Thank you so much, sir. Now I would like to call upon Kabir Gajjar, who won the Vijay Merchant Trophy under 16 from Gujarat team. I request Shri Manhar Bhai Lapsiwala to please give away the trophy. Can we have a huge round of applause? Thank you so much, sir. Now is the turn of our budding actor of Imli fame, Riyansh Gandhi. Riyansh Dabi. I request Shri Srivas Bhai Giwala to please give away the trophy to our little star. Can we have a huge round of applause for him? Thank you so much, sir.
Amans Dabi has got the award for working in, right now he's working with Imli serial, television serial. So can we have a huge round of applause for him? Let's now welcome the fashion model of PRKVS, Shraddha Patel, who won the title Star Life Miss Teen India 2021. I request Shri Dharmesh Bhai Tamakuwala to please give away the trophy. Can we have a huge round of applause for her? Thank you so much, sir. Time for another fabulous fashion model, Diya Jani. She has been awarded with Miss Teen Bharat Icon 2022. I request Shri Mukesh Bhai Varyava to please give away the trophy. Can we have a huge round of applause for her? Thank you so much, sir. Now I would like to call upon Freya Parekh, who was a participant in the team for making the Guinness World Record for the maximum number of speakers on the theme Growth of India. I request Shri Mukesh Bhai Dalal to please give away the trophy. Can we have a huge round of applause for her? Thank you so much, sir. Moving towards the next category, sport is an indelible part of any educational system. So, here we are, applauding our national and state level champions of the year 2021-22. I request Shri Arvind Bhai Mehta and Shri Manhar Bhai Lapsiwala to give away the trophies to the students who have excelled in different sports. First of all, Aman Shehzad Sheikh, national level champion of roller hockey from 7th standard. Sahu Astha Rajesh, national level champion of Kude Karate, 11th Commerce. One Sandeep Chorawala, national level champion of roller skating from 9th standard. Preet Manish Bora, national level champion of karate. Mokshda Hiren Patel, national level champion of gymnastics from 11th Arts. Man Neville Chaudhary, national level champion of roller hockey from 7th standard. Pushkar Apurva Panchal, national level champion of roller hockey from 7th standard. Shukla Arnav Mahendra Bhai, state level champion of taekwondo from 8th standard. Yatharth Ashish Prajapati, state level champion of mixed martial arts from 8th standard. Pratishtha Rakesh Toshniwal, state level champion of table tennis from 8th standard. Can we have a huge round of applause for them? Thank you so much, sir. Now I request Shri Srivas Bhai Giwala and Shri Dharmesh Bhai Tamakuwala to give away the trophies to all the state level champions. Riya Virag Gilitwala, state level champion of mixed martial arts from 11th Commerce. Arav Virag Gilitwala, state level champion of mixed martial arts from 8th standard.
Rachit Jai Javeri, state level champion of Kabaddi from 12th standard. Vihan Khajodia, state level champion of Kabaddi from 9th standard. Josefa Imran Gandhi, state level champion of Kabaddi from 9th standard. Yuvraj Ashish Kumar Kapadia, state level champion of Kabaddi from 10th standard. Rafi Sajid Virani, state level champion of Karate from 11th Commerce. Mahir Hitesh Gajjar, state level champion of cricket from 6th standard. Advait Rakesh Kumar Khalasi, state level champion of cricket from 9th standard. Jeet Dharmesh Bhai Bhajiwala, state level champion of cricket from 9th standard. Navya Mahendra Shukla, state level champion of volleyball from 11th Commerce. Thank you so much, sir. Can we have a huge round of applause for them? Now I request Shri Mukesh Bhai Varyava and Shri Arvind Bhai Mehta to give away the trophies to our state level champions. Vishwa Neeraj Kumar Shah, state level champion of volleyball. Priya Tulsi Rajubai Jain, state level champion of volleyball from 11th Commerce. Vedant Krunal Chunawala, state level champion of gymnastics from 4th standard. Hitans Krunal Chunawala, state level champion of gymnastics. Om Dhruv Kumar Chauhan, state level champion of skating from 10th standard. Parva Nirmal Kumar Bogar, state level champion of roller hockey from 8th standard. Ans Sandeep Choksi, state level champion of karate from 12th science. Heath Arvind Bhai Patel, state level champion of kabaddi from 11th science. Nikunj Jadhav, state level champion of kabaddi from 11th commerce. Manan Harmesh Patel, state level champion of cricket from 9th standard. Patel Dhruvil Rahul Bhai, state level champion of roller hockey. Preeti Pravan Kumar Bhana Bhagwanwala, state level champion of gymnastics. Can we have a huge round of applause for them? Now, moving to the next category of prize distribution, academics being the prime area of any education, here we are felicitating our toppers from the grade 1st to 12th. First of all, we are representing the P.R. Khatiwala Vidya Sankul Scholarship 2019-20 to our students who have excelled in their academics in their respective standards. I request Shri Manhar Bhai Lapsiwala and Shri Mukesh Bhai Dalal to give away the certificates and check award of Rs 3,000 to each. First of all, Chote Tithi Anand from Standard 1st. Patel Mishika Deepakmal from Standard 2nd. Patel Vrusti from Standard 3rd. Patel Freya from Standard 4th. Patel Saurya from Standard 5th. Joshi Saloni from Standard 6. Marchawala Drumil from Standard 7th. Khandekar Hetvi from Standard 8th.
Vadnere Anviksha from Standard 9. Thank you so much, sir. May I have a huge round of applause for our intelligent students. Now I request Shri Shrivasbhai Giwala and Shri Mukeshbhai Varyava to give away the certificate and check award of rupees 3,000 to each. First of all, Shah Rishali Premil from Standard 10th. Shah Yasvi Atesh Kumar from 11th Science. Mistry Harsil Vyomesh from 11th Science. Shah Vidhi Milan from 11th Commerce. Jha Radhika Santosh Kumar from 11th Arts. Vankawala Nidhi Brijesh from 12th Science. Rana Devanshi Prashant Kumar from 12th Science. May we have a big round of applause for our meritorious students. Now, we present the Baba Sachidanand Scholarship 2019-20 to our students of class 9th and 11th having stood first and second in their respective classes and streams. May I request Shri Arvind Bhai Mehta and Shri Mukesh Bhai Dalal to give away the certificate and check award of rupees 6,000 to the students who secured the first ranks in 9th and 11th standard and check award of rupees 4,000 to the students who secured the second ranks in 9th and 11th grades. Vadnere Anviksha Dushyant stood first from Standard 9. Nahar Karishma from Standard 9. She stood second. Shah Vidhi Milan from 11th Commerce. She stood first. Soni Tisha Madhusudan from 11th Commerce. She stood second. Mistry Harshil Vyomes from 11th Science. He stood first. Jariwala Devanshi Hemant Kumar from 11th Science. She stood second. Jha Radhika Santosh Kumar from 11th Arts. She stood first. Jadhav Sunny Jai Singh from 11th Arts. Thank you so much, sir.
May we have a great round of applause for our remarkable students. Now we present Srimati Bharti Arvind Lapsiwala Scholarship 2019-20, which is given to the students of 8th, 9th and 10th grade for scoring the highest marks in maths, science and English in their respective classes. I request Shri Mukesh Bhai Varyava and Shri Dharmesh Bhai Tamakuwala to give away the certificate and check award of rupees 3,000. We are starting with 8th standard. Bardoli Joy Viral. He scored highest marks in maths. Gamit Meet Kumar Girish Bhai. He scored highest marks in science. Gianni Shlok Piyush. He scored highest marks in English. Let's move towards 9th standard students. Khambati Mrudali Bipin Chandra. She got highest marks in maths. Nahar Karishma Suresh Kumar. She got highest marks in science. Vadnere Anviksha Dushyant. She got highest marks in English. Thank you so much, sir. Moving towards 10th standard, Shah Risali Premal. She got highest marks in maths. Mehta Nitya Vaibhav Bhai. She got highest marks in science. Behalf of Nitya, we have her father here. Highest marks in English in SSC board examination. Thank you, sir. May we have a great round of applause for our polymath. We are very fortunate to have the Honorable President, Shri Arvind Bhai Mehta with us. Now I request the Honorable President, sir, to say a few words and motivate our students. કેમ્પસ માં બેઠેલા સભ્ય ભાઈઓ બહેનોનું હાર્દિક અભિવાદન કરું. આ પહેલાં ઇંગ્લિશ મીડિયમના પ્રિન્સિપલ ડૉક્ટર ઝુબિન માસ્ટર આપણી કોમ્પ્લેક્સની દિવાલોને આંબીને આકાશમાં જાય એટલા ઊંચા અવાજે બહુ સારી વાતો કરી ગયા. અને એમણે આ શાળામાં એમણે શું કર્યું છે અને શાળામાં કયા કયા પ્રોગ્રામો થયા છે ચાલે છે એની બહુ સુંદર વિગત આપી. અને આ બધો લાભ મેળવનારા વિદ્યાર્થીઓને હું ધન્યવાદ પાઠવું છું. આપ સૌ જાણો છો કે PR ખાટીવાડા વિદ્યા સંકુલ 2001ની સાલથી શરૂ થયેલી
અને કહેવામાં આવ્યું એ પ્રમાણે આપણે નીતિ પહેલેથી રાખેલી કે એડમિશનને માટે કોઈ પણ પ્રકારનું ડોનેશન લેવું નહીં. અને એ નિયમને હજુ સુધી ને હંમેશને માટે અમે વળગી રહ્યા છે અને વળગી રહીશું. આપણી શાળા ઉત્તમ શિક્ષણ, ઉત્તમ કેમ્પસ, આપણા જે ભવનો છે એ એવા સુંદર આર્કિટેક્ચરવાળા છે. અને આટલું મોટું ગ્રાઉન્ડ, એના થકી સમગ્ર શહેરમાં એક પ્રકારની ઊંચી પ્રતિષ્ઠા ધરાવે છે. તો આવી શાળા એમાં કંઈક ના કંઈક વિકાસ તો કરવો જોઈએ. તો ડૉક્ટર જુબીને ખ્યાલ આપ્યો છે કે આમ પણ સરકાર 2 વર્ષ પછી CBSE કોર્સ લગભગ ફરજિયાત કરવાની છે. તો આપણે એ વિશે આગળ ચાલ્યા છે અને એની પરમિશન સરકાર પાસેથી મેળવવાની બધી પ્રક્રિયાઓ શરૂ કરી દીધેલી છે. એટલે આવતા વર્ષે હોપફુલી એ CBSE કોર્સને ઇન્ટરનેશનલ PR ખાટીવાળા ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ આપણે શરૂ કરી શકીશું. આ વર્ષે જે પ્રકારનું શિક્ષણ કાર્ય ચાલી રહેલું છે એના માટે જે આયોજન થયું છે, આ ડૉક્ટર જુબિન માસ્ટર અમને આ ટર્મની શરૂઆતથી પહેલી વખત મળ્યા અને એ આપણી શાળાનું સદભાગ્ય છે કે એક ડૉક્ટરેટવાળા PhD થયેલા અનુભવી અને નિષ્ણાત શિક્ષક આચાર્ય આપણી શાળાને પ્રાપ્ત થયા. એમણે જે પ્રકારનું આખું માળખું શિક્ષણને માટે ગોઠવ્યું એ બધું અમને પણ બતાવેલું અને સતત તેઓ અમારા ટ્રસ્ટી મંડળના સંપર્કમાં રહે છે. જે કંઈ નવું કરવાનું હોય, જે ચાલે છે તે, તો એ જોઈને અમે ખરેખર રાજી થયા. અને સદભાગ્યે એમણે જે આયોજન કર્યું એને આપણી શાળાના જે શિક્ષકો છે અને ખાસ કરીને સિનિયર શિક્ષકો એના તરફથી પણ ખૂબ જ ઉત્તમ સહકાર મળ્યો છે. અને હું આશા રાખું છું કે આ જે કામગીરી આચાર્ય અને આપણા શિક્ષક ભાઈઓ બંનેએ કરી છે એનું સારું પરિણામ આવતી પરીક્ષામાં આપણને અવશ્ય મળવાનું છે. તો આ બધાને હું ધન્યવાદ પાઠવું. આજનું આ જે ફંક્શન સોશિયલ ગેધરિંગ, એમાં ભાગ લેનારા તમામ કલાકારોને મારા ધન્યવાદ. એમને તૈયાર કરનારા કોરિયોગ્રાફરને પણ સલામ કરું. એને માટે શિક્ષક બહેનોએ ભાઈઓએ પણ ઘણી મહેનત કરી છે, સ્કૂલના ઓફિસ સ્ટાફે પણ કરી છે. અને મને બહુ આનંદ થાય કે અમારા હોદ્દેદારો પૈકી પણ ધર્મેશભાઈ, મુકેશભાઈ, સંજયભાઈ, એ બધાએ પણ બહુ સખત પરિશ્રમ કર્યો છે આ સ્ટેજ બનાવવા માટે અને હોલની વ્યવસ્થા ઊભી કરવા માટે. તો એ લોકોને પણ ધન્યવાદ આપું છું. એક વધારાની વાત કરી લઉં કે અમારી સામે અને તમારી પાછળના ભાગમાં આ લાઇટિંગવાળું જે નવું બિલ્ડિંગ ઊભું છે એ નવું સ્પોર્ટ્સ બિલ્ડિંગ છે. અને એ બિલ્ડિંગમાં ભોંયતાળિયા ઉપર લગભગ 700 વિદ્યાર્થીઓ બેસી શકે એસેમ્બલી એટલી એની જગ્યાને સાથે સાથે એના પર કાર્યક્રમ કરવો હોય, નૃત્ય, સંગીત, નાટક, તો તેના માટે મંચની પણ વ્યવસ્થા છે. અને ઉપરના માળ ઉપર સુંદર લાઇબ્રેરી બનશે, વિશાળ કોમ્પ્યુટર રૂમ છે, જિમ્નેશિયમ છે, ઇન્ટર સ્પોર્ટ્સ પણ એની સગવડ પણ મળશે. એટલે આ બધી સગવડ આ મકાનમાં મળવાની છે. અને એટલે આ નવું ભવન એ આપણી શાળા માટે એક ઘરણું બની રહેશે. તો એનો ઉપયોગ સૌ કરશે એવી મને આશા. અને બીજી એક જ વાત કરી લઉં કે જે વાલીઓ અહીં ઉપસ્થિત છે એઓ સતત પોતાના સંતાનોના પરિચયમાં રહે છે. એમને ખ્યાલ આવતો જ હશે કે અહીં શિક્ષકો કયા પ્રકારે કામ કરે છે, કેટલું ને કેવું સારું કામ થાય છે. હવે જો એનાથી તમને સંતોષ થયો હોય તો હું ઈચ્છીશ કે આ શાળામાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા કેવી રીતે વધી શકે એ
તમારા બધાના અભિપ્રાયથી પણ વધી શકે, તમારા સારા અનુભવો તમારા પરિચિતોમાં, તમારા સ્નેહોમાં તમે પ્રસારતા રહો, એમની જોડે વાતચીતમાં રહો, તો એ પ્રકારે શાળાને મદદ તમે કરી શકો. બીજું કાંઈ કહેવું નથી. આજના કાર્યક્રમના બધા કલાકારોને ધન્યવાદ. અમારા બેઉ પ્રિન્સિપાલો ડૉક્ટર જુબિન માસ્તર અને ઠાકોર સાહેબને પણ મારા અભિનંદન. આભાર. Thank you so much, sir, for your golden words. It's an honor to hear from you. Can we have a huge round of applause for him? It is indeed a very pleasant moment to call upon the stage Shri Mukesh Bhai Dalal to address the audience. Can we have a huge round of applause for him? Shruti Modwanik, Samashta Panch President, respected Sri Srivas Bhai Giwala, immediate past President, Sri Manar Bhai Lapsiwala, Sri Arvind Bhai Mehta, other dignitaries on the dais, off the dais, my dear students and guardians, their guardians, parents, present over in this ceremony. It is indeed my great pleasure to be here on this leaning evening, but thrilling and chilling climate. I saw and I was carefully listening what principal was describing the achievements of the school in the previous year. I was really surprised that one school could have so many achievements in one academic year. So you should feel proud that your son and your daughters are studying in this school. You are also fortunate in another way, that is, the body, the dignitaries sitting on the dais, I have seen them working in the social field for last over 2 or 3 decades. And the kind of dedication, the kind of honesty, the kind of hard work they are doing even at this stage of life, it is very difficult to find one of them in our society. I was counting number of champions in the school. So I was surprised that one school could have so many champions, so many awards, so many prizes in all segments of the school, academic, sports, extracurricular. It shows the level and the reputation of the school. I congratulate all those who have got awards and prizes, and convey my good wishes to others who have missed them. I also congratulate those who have participated in the event and the staff who have trained them, who have worked hard. And it is very difficult to extract work from these children. Very tough job. I have nothing to say to the students except that play while you play and study while you study. But I will like to pinpoint to the guardians that take care of your sons and daughters, but don't impose your ambitions, your dreams, or what you have missed in your life upon your children. Let them grow and let them develop in their own way. And let them be playful. I know many of you may not have English background and you may be facing many problems,
while teaching them or while taking care of them. But apart from your busy schedule, your struggling personal life, give utmost priority to the education of your children. Education is the only parameter for your children in the future. Education system is growing and developing, and it is changing fast globally and in the country as well, as Arvind Bhai rightly pointed out. And one danger I want to point out at this stage, that I have seen many children after 10, 11 and 12, particularly studying in English medium, that they have to leave study because they are not able to grip or they are not able to clear the exams. So keep this danger of future in mind right from today. And it is not necessary that all children get 90 or 95 out of 100. And whatever they want to study, whatever their field of interest is, you give them opportunity. I am also lucky that I got an opportunity to attend annual general ceremony of the school. I am fully aware of the functioning of the school, and in fact, in the past too, I had attended many functions in the school. So I feel really proud and thank our dignitaries, all dignitaries on the dais, for inviting me to grace this annual function of your school. Thank you very much. Thank you, sir, for your highly appreciating words. Can I have a huge round of applause for him? Now, may I request the Gujarati medium principal, Shri Rajendra Bhai Thakur, to come and say a few words. નમસ્કાર. શ્રી સુરતી મૂઢવણિક સાર્વજનિક ટ્રસ્ટ સંચાલિત PR ખાટીવાલા વિદ્યા સંકુલના આદરણીય પ્રમુખ શ્રી અરવિંદભાઈ મહેતા, ઉપપ્રમુખ શ્રી મનહરભાઈ લાપસીવાળા, દક્ષિણ ગુજરાતની જાણીતી અને સદા અગ્રેસર એવી સુરત પીપલ્સ બેંકના પ્રમુખ શ્રી મુકેશભાઈ દલાલ, સમસ્ત પંચના પ્રમુખ અને સંસ્થાના મંત્રી શ્રી શ્રીવાસભાઈ ઘીવાલા, સહમંત્રી શ્રી ધીરજલાલ તમકુવાલા, ખજાનચી શ્રી મુકેશભાઈ વરિયાવ, સહખજાનચી શ્રી ધર્મેશભાઈ તમાકુવાલા, આમંત્રિત મહેમાનો, વાલી મિત્રો અને જેમના માટેનું આ આયોજન છે તેઓ બાલવૃંદ, મારા કલીગ અંગ્રેજી માધ્યમના આચાર્ય ડૉક્ટર ઝુબીન માસ્ટર અને બંને માધ્યમના સર્વે સહકર્મચારી મિત્રો તથા ટેકનિશિયનો. આમ તો આપણી સંસ્થાએ ઘણી પ્રગતિ કરી છે અને તે હરણફાળ ક્રમશઃ આગળ વધી રહી છે. મારી અગાઉ પ્રમુખશ્રીએ અને અંગ્રેજી માધ્યમના આચાર્ય ઝુબીન સરે પણ કહ્યું છે, પરંતુ એક વાત કે આપણે જે નવી સ્કૂલ PRK ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ CBSE બોર્ડની ચાલુ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, તેની સાથે સાથે આપણી અંગ્રેજી માધ્યમની સ્કૂલ એ ચાલુ જ છે, એને પેરેલલમાં બંને ચાલશે. ત્યારબાદ સતત કાર્યશીલ અને વ્યસ્ત હોવા છતાં આપણા આમંત્રણને માન આપી સુરત પીપલ્સ બેંકના પ્રમુખ પ્રસંગને દીપાવવા
અને વિદ્યાર્થીઓને ઉત્સાહિત કરવા માટે પધારેલા છે. તેમનો હું સંસ્થા વતી આભાર માનું છું અને ભવિષ્યમાં પણ આપણને આ રીતનો સહકાર મળતો રહેશે એવી આશા રાખું છું. સંસ્થાના જે તમામ પદાધિકારીઓ અને ટ્રસ્ટીશ્રીઓ દ્વારા અમને સતત પીઠબળ મળતું રહે છે અને એ પીઠબળ સતત મળે જ તેવી આશા વ્યક્ત કરું છું. અને વાલી મિત્રો તથા વિદ્યાર્થીઓ તરફથી સતત સહકાર મળે જ છે અને એ સહકાર પણ અવિરત મળતો રહેશે તો સંસ્થાની પ્રગતિ અવશ્ય થશે જ. તે સાથે હું વિરમું છું. જય હિન્દ, જય ભારત. થેન્ક યુ. Thank you so much, sir, for your encouraging words. Let us continue with our remaining performance of the evening. Thank you, everyone. अरे ओ दया, तुझे पता है खाना तो हम गुजरातियों की सबसे पहली ज़रूरत है. अरे क्या क्या नहीं है हम गुजराती खाने में. પોરબંદરની ખાજલી, શિહોરના પેંડા, રાજકોટની તીખી ચટણી, ભાવનગરના ગાંઠિયા, સુરતની ગારી, વડોદરાનો લીલો ચેવડો અને અમારા ખંભાતનું હલવાસન. આહા, આ વાનગીઓની વાત કરીને મોઢામાં પાણી જ આવી ગયું. આહા, ગરમા ગરમ ઊંધિયું કી તો बात ही कुछ और है. तो टप्पू के पापा, इसी बात पे गर्मा गर्म ऊंधी हो जाए. हाँ हाँ हो जाए, पर सुबह के खाने में अगर फाफड़ा जलेबी मिल जाए तो जलसो ज पड़ी जाए. हो जलसो ज पड़ी जाए. स्वादिष्ट जलेबी, मिठास से भरपूर जलेबी, चाहे कुछ भी हो जाए जलेबी अपनी मिठास कभी नहीं छोड़ती. सिम कार्ड के बिना जैसे मोबाइल नहीं चलता, सिम कार्ड के बिना जैसे मोबाइल नहीं चलता, ठीक वैसे ही जलेबी के बगैर फाफड़ा नहीं चलता. ભાઈ કેમ છે? જો બી તારો નેમ છે, તારો માટે ગાના લાવ્યા, આ તો મારો પ્રેમ છે. ગુજરાતી ભાઈ ગરબા ગાય, ચટણી મારચા ને ફાફડા ખાય. હે ગુજરાતી ભાઈ ગરબા ગાય, ચટણી મારચા ને ફાફડા ખાય. અરે ફાફડા ખાય, જલેબી ખાય, કોઈ પણ લફડામાં પડતા ન જાય. ગુજરાતી ભાઈ ગરબા રમવા જાય, ગરબા નાચીને દિલ બહેલાય. સુરત બરોડા જવાનું, કાઈટ ફેસ્ટિવલમાં જલસા કરવાનું, પતંગ ચગવાનું, ઊંધિયું ખાવાનું, કાઈ પોચે બોલતા રહેવાનું. ડીજે કી બીટ્સ पे पैर थिरकाए, गुजराती भाई दांडिया रमवा જાય. હે ગુજરાતી ભાઈ ખાખરા ખાય, છોકરીના પાછળ છોકરા જાય. હે ગલ્લા પર બેસીને રોકડા ગણવાનું, જય શ્રી કૃષ્ણ કહેતા રહેવાનું. કેમ છે
सारू छे बोलता जवानों खुद की मस्ती में झूमता जाए बिजनेस की दुनिया का किंग कहलाए गुजराती भाई केवला सकाए काठिया थेपला ने खिचड़ी खाए हे ढोकला खाए खांडवी खाए हर एक पार्टी में धमाल मचाए गुजराती भाई फर्स्ट क्लास गाए संदल वाग्यो धम धम धमाल मचाए धम 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 धमाल मचाए रमवा जाए गरबा रमवा जाए रमवा जाए गरबा रमवा जाए। अरे प्रफुल्ल और हंसा, आप यहाँ? जेठालाल और दया भाभी ने खाने के बारे में बहुत कुछ बताया, तो चलो आज हम PRKVS के फंक्शन में गुजराती खाना सेलिब्रेट करते हैं। हाय हाय प्रफुल्ल, सेलिब्रेट मतलब? मैं हूँ ना, मैं समझाता हूँ हंसा को। सेलिब्रेट हंसा, अरे वो अपनी कंचन मौसी की मीनाक्षी है ना, वो अपनी सास की बुराई करते वक्त क्या बोली थी? वो बोली थी मेरी सास को तो दोनों वक्त पराठे और रोटी ही चाहिए, साली ब्रेड तो खाती ही नहीं है, साली ब्रेड तो खाती ही नहीं है, साली ब्रेड सेलिब्रेट। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हंसा, सेलिब्रेट। ગુજરાતીનું દિલ નરમ આઈસ્ક્રીમ જેવું, ગુજરાતીની બોલી મીઠી જલેબી જેવી, ગુજરાતીનો સાથ ચટપટા અથાણા જેવો, ગુજરાતીનો આત્મવિશ્વાસ કડક ખાખરા જેવો, ગુજરાતીનો સાથ મિલનસાર દાળ ઢોકળી જેવો, ને ગુજરાતીનું FM બોલે તો રેડિયો મળશે 91.1। अरे वाह,
यादगार गीत। चले चाहे सारा जमाना, चाहे तुझे तेरा दीवाना, संग तेरे में भाग जाऊं, नजर किसी को भी ना। अरे लोग दिल वालों से यार जलते हैं, कैसे बताऊं क्या क्या चाल चलते हैं। मैं तो गाड़ी से जा रहा था, मैं तो सीटी बजा रहा था, मैं तो टोपी फिरा रहा था। अरे गाड़ी से जा रहा था, सीटी बजा रहा था, टोपी फिरा रहा था। तुझको धक्का लगा तो मैं क्या करूं, तुझको धक्का लगा तो मैं क्या करूं। हेलो, आप जिस नंबर को कॉल कर रहे हैं वो अभी प्यार में है। नई कोई पिक्चर दिखा दे, मुझे कहीं खाना खिला दे। जरा निगाहों से पिला दे, प्यास मेरे दिल की बुझा दे। तेरी निगाहों से दीदार करना है। मैं तो ठुमका लगा रही थी, मैं तो गीत कोई गा रही थी, मैं तो चक्कर चला रही थी। ठुमका लगा रही थी, गीत कोई गा रही थी, चक्कर चला रही थी। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। एक कुली હું છું ગુજરાત. મારી સ્થાપનાને 62 વર્ષ થયા, પણ મારો ભૂતકાળ પ્રાચીન અને ભવ્ય છે. પહેલાં હું અપરાંત, પછી અનાર્થ, લાટ અને છેલ્લે ગુર્જરના નામે ઓળખાતું, અને આજે સહુ મને ગુજરાત કહે છે. આ અવસરે હું આપ સૌને મારી યશગાથા સંભળાવું છું. હું એ ધન્ય ધરા છું જ્યાં શ્રી કૃષ્ણએ પોતાના દેહ ત્યાગ કરવાનું પસંદ કર્યું હતું. મને પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ, શક્તિપીઠ અંબા, બહુચરા અને મા કાલીના આશીર્વાદ છે. મહામાનવ ગાંધી, સરદાર પટેલ, રવિશંકર મહારાજ અને ઇન્દુ ચાચા પણ મારા જ રત્ન દેવડા છે. મારા કચ્છનું ધોળાવીરા અને લોથલ જ સિંધુ સભ્ય સંસ્કૃતિના આયોજનબદ્ધ નગર છે. સીદી સૈયદની જાળી, રાણકી વાવ, ચાંપાનેર અને વડનગરનું કીર્તિ તોરણ મારા કલાકારગીરીનો કમાલ છે. મારી છાતીએ મૈયા નર્મદા, સરસ્વતી, તાપી અને મહી જેવી નદીઓ વહે છે. સૌથી લાંબા દરિયાકિનારાનું સૌભાગ્ય પણ મને જ મળ્યું છે. દુનિયાના દાંતે વળગેલી કેસર કેરી પણ મારી જ દેણ છે. વાદળથી વાતો કરતો અને હિમાલયથી પુખ્ત ગિરનાર મારી ઐતિહાસિકતાનું પ્રતીક છે.
सुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते The most trusted bond of love. Any guesses? Yes, the bond between the mother and the child. A bond of security, selfless love and care. The most significant and godly relationship. Let us now witness this bond. इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी होठों पे उंगली चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए आधी आधी बांट ले आजा दिल की ये जमीन थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ चारे दीवारें फिर भी झरोखे खुले बादलों के हो पर्दे शाखें हरी पंख झले ना कोई तकरारे हर मस्ती ठहाके चले प्यार के सिक्कों से महीने का खर्चा चले दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी होठों पे उंगली चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए आधी आधी बांट ले आजा दिल की ये जमीन थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ
others, we all could witness the great connection, the bond of love. Sports are a crucial part of students' growth and development. They help in the development of mental health and physical fitness of the body. Through participation in sports and games, a student gains various skills, experience, and confidence that are helpful for developing their personality. It also instills patience, self-discipline, perseverance to accept the beauty of defeat and improving their skills, teamwork, and lifelong habits of fitness which they will carry till adulthood. And lifelong habits of fitness. मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं।
सब कह रहे हैं आदि योगी। योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। सांस शाश्वत सनन सननन प्राण गुंजन घनन घननन उतरे मुझ में आदि योगी। योग धारा छलक छन छन सांस शाश्वत सनन सननन प्राण गुंजन घनन घननन उतरे मुझ में आदि योगी। उतरे मुझ में आदि योगी। पीस दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा। पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा। भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी। योग उत्सव रंग भर दो आदि योगी। बज उठे ये मन सितारी झनन झनन झनन
से बस 2 कदम पे देखो जीत खड़ी। हम मुझे कब से इंतजार था आज की शाम का, अब देखो क्या करता है ये बंदा हिंदुस्तान का, जो किसी के भी आगे झुका नहीं। हाँ मैं हूँ उस देश का, बैठ के ले नजारा इस ट्रैवल और बेस का। सीधा चलूं या चलूं ढाई चाल, मैं खेल मेरा होगा ये देख लंबी रेस का। मिट्टी का कर्ज है मैं मर के भी चुकाऊंगा, तुझे मिट्टी कर दूंगा या फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा। जो भी कहा था मैं वो करके दिखाऊंगा, इंडिया से हूँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं जब के पकड़ झाड़ दूंगा, तुझको मैं उखाड़ दूंगा। जहाँ से तू आया है ना वहीं तुझे गाड़ दूंगा। तेरी जमीन पे आज तुझे ही पछाड़ दूंगा, झंडा इंडिया का बटे मुझे कोई परवाह नहीं। माँ ही मेरा रब है, मेरी माँ ही मेरा पीर, मेरी माँ के पैरों के अलावा कोई दरगाह नहीं। नाचूंगा नाचूंगा मुझको फितूर है, नाचूंगा नाचूंगा दिल मजबूर है। आज की शाम मेरी माँ के है नाम, मेरी माँ मुझे देखेगी नाचना जरूर है। मैं जीतूं या हारूं मुझे नाचना जरूर है, मेरी माँ मुझे देखेगी नाचना जरूर है। नाचना जरूर है, मुझे नाचना जरूर है। माँ मुझे नाचना जरूर है, माँ मेरी देखेगी नाचना जरूर है। रंग केसर शूरा वालिया, रंग सब्ज खिली फुलकारियां, ओ रंग चिट्टा नीयत साफता, ओ रंग तीनों जान से प्यारे। मैं चुकावा तेरा एहसान, माए तेरी चुनरिया लहराए। जब तक मुझ में है जरा सी जान, माए तेरी चुनरिया लहराए। तेरा नाम है साजा, आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। सच्ची मैंने जा
કેમ છો? મજામાં? मुझे पहचाना? नहीं पहचाना? चलो कुछ हिंट देता हूँ। जब से मेरे कदम गुजरात में पड़े तो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गए कि पूरी दुनिया गुजरात का नाम जानने लगी। पूरी दुनिया में डिजिटल गुजरात जाना जा रहा है। कोई भी डिपार्टमेंट हो, रेलवे, शिक्षा, व्यापार, भाई मैं दिखाई दे रहा हूँ। अभी भी नहीं पहचाना? भाई मैं हूँ विकास। ये मैंने तुझे कहीं देखा है। अरे हाँ, तू तो वही है ना जो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। बराबर अपनी बुराइयों की जंजीर से मेरे पैरों को जकड़ने की कोशिश करता है। भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, जहाँ नशे की बात हो, तू कितनी भी कोशिश कर ले, याद रख मैं आगे बढ़ता ही रहूंगा। और हाँ, कोई तो मुझे तेरे से बचाएगा और इसका कोई तो सॉल्यूशन होगा। अरे भाई, मेरी जंजीर इतनी मजबूत है ना कि कोई तुझे बचा नहीं सकता। जहाँ देखो वहाँ गुजरात के विकास विकास और विकास की ही बात हो रही है। मेरा तो कोई वजूद ही नहीं। मुझे तो जैसे गुजरात के बाहर ही धकेल रहे हैं। तुझसे पीछा छुड़ाने के लिए कोई तो उपाय होगा, और हाँ, होना ही चाहिए। પપ્પા, મમ્મી, અરે શું થયું? અરે બા, અરે દીકરા શાંતિથી પડી જશે બા. શું થયું છે? મમ્મી, તમને ખબર છે આજે મારું રિઝલ્ટ હતું. હું આખા કોલેજમાં ફર્સ્ટ આવ્યો છું, ફર્સ્ટ. અરે બા, ઓ બા, હું પ્રથમ આવ્યો છું, પ્રથમ. ઓ મારો દીકરો પ્રથમ આવ્યો છે. અંબે માં તારી લાખ લાખ કૃપા. શાબાશ દીકરા, શાબાશ. આજે તો તે મારું નામ રોશન કરી નાખ્યું. હવે હું આખા ગામમાં છાદી ચોળી કરીને ચાલી શકા. बा, मैं मिठाई लेकर आती हूँ. तुम पूजा की तैयारी करो. आज हम सब मिलकर माँ अम्बे को प्रणाम करेंगे. દીકરા, હવે આગળ શું વિચાર્યું છે? તને મારા જેમ રાજનીતિમાં આવું છે કે કંઈ બીજું કરવું છે? पप्पा, मुझे भी राजनीति में आना है, पर आपके जैसा नहीं. दूसरे नेताओं को देखो और एक हमें देखो. उनके बच्चे शहर में विलायत में पढ़ते हैं, विलायत में. और एक यहाँ मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है. हाँ पप्पा, मैं भी आपके जैसे लोगों की भरपूर सेवा करना चाहता हूँ, उनकी मदद करना चाहता हूँ. पर पप्पा, काका भी तो मंत्री है. उन्हें देखो, उनके पास कितनी गाड़ी है, बंगले हैं. उनका तो रुतबा ही अलग है. अच्छा, तो तू ये कहना चाहता है कि तुझे रमणीक काका जैसा बनना है? अरे भाई, यहाँ पे मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है? अरे रमणीक, तू यहाँ? अरे मोटा भाई, केम छो? बस मजाમાં. તું કેમ છે? बस शांति मोटा भाई. તમે કેમ છો ભાઈ? अरे केम छो बा? અંબે માની કૃપાથી बहुत सारी छू. अरे भाई बताओ ना, यहाँ पे मेरा नाम क्यों लिया जा रहा था? अरे कुछ नहीं, आज हिरेन का रिजल्ट आया था. पूरे कॉलेज में प्रथम आया है, तो सिर्फ पूछ रहा था कि तुझे किसके जैसा बनना है. अरे भाई, अपना नरेश भी 54% से पास हो गया. वाह, सरस सरस દીકરા. ચલો બધા અંબે માના ગરબા રમીએ. તારા વિના શ્યામ મને એકલડો લાગે,
रासे रमवान भलो आवजे तारा विना श्याम ने एक लड़ लागे रासे रमवान भलो आवजे तारा विना श्याम एक लड़ लागे तारा विना श्याम एक लड़ लागे रासे रमवान वहलो आवजे ओ रासे रमवान वहलो आवजे तारा विना श्याम ने एक लड़ लागे रासे रमवान वहलो आवजे तारा विना श्याम ने एक लड़ लागे रासे रमवान वहलो। वाह भाई वाह, मजा आ गया यहाँ पे आके। यहाँ पे जब हम सब लोग मिलते हैं ना तो वो दिन जलसा ही हो जाता है। अरे हाँ रमणीक, आज तो मारो गुजरात छे, અહીંયાની વાત જ કઈ અલગ છે। કાકા જલસા તો છે, પર તમને એક વાત કહું, અહીં 15 દિવસ સુધી લાઈટ નહીં આવે, ઘરે આવવા માટે બાકી સડકો નથી, અને વાત કરે છે જલસાની। अरे भाई, वहाँ पर सब कुछ कैसा है? वहाँ तो जिंदगी की मजे ही मजे है। भाई तू बता, तू कैसा है? अरे भाई मैं तो अच्छा हूँ। चल भाई तुझे गांव दिखाने ले जाता हूँ। अरे गांव में क्या दिखाएगा? अरे तू चलना। चल। मोटा भाई आप एक काम करो, हिरेन को मेरे साथ भेज दो। मेरे साथ रहकर राजनीति के सारे दांव पेच सीख लेगा। अरे रमणीक, तुझे पता है हिरेन भी जनता की सेवा करना चाहता है, उनके लिए बहुत कुछ करना चाहता है। मोटा भाई, हमारे पप्पा भी राजनीति से जुड़े हुए थे, हम दोनों ने उन्हीं से सब कुछ सीखा। लेकिन तुम एक बात भूल गए कि हम जनता के लिए नहीं, जनता पर राज करने के लिए पैदा हुए हैं। देखो तुम किस हालत में रह गए, और मुझे देखो, मेरा रुतबा है रुतबा। देख रमणीक, तू खाने में तो 4 रोटी ही खाता है ना, सोना तो नहीं खाता। खैर छोड़, अच्छे कर्म करोगे तो उसका फल भी अच्छा ही होगा, और अब तो सबके कर्म के फल यही मिल जाते हैं। अरे भाई मजा आवी ने? हाँ बહુ મજા આવી આજે તો। चलो चलो बद्दा आवी जाओ, खाना लग गया है। पप्पा मुझे काका के साथ भेज दो ना। आपको पता है ना, यहाँ पे आगे पढ़ने के लिए लाखों रुपए लगेंगे, लाखों। और वहाँ पर काका मुझे अच्छी कॉलेज में दाखिला दिला देंगे। पर बेटा, तेरा रिजल्ट देख के तो तुझे कोई भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, तू चिंता क्यों करता है? पर पप्पा सीट कितनी कम होती है, और उसमें से आधी सीटें कुछ पॉलिटिशियन ले जाते हैं और आधी सीटें बड़े लोग ले जाते हैं। हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे? ठीक है बेटा, जैसे तेरी इच्छा। बेटा मेरी एक बात हमेशा याद रखना, हम उस प्रांत में रहते हैं जहाँ महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी रहते थे। अपने संस्कारों को कभी भूलने मत देना बेटा। माँ नाश्ता लगा दो, मुझे जल्दी जाना है। अरे हाँ बेटा, अभी बनाती हूँ। क्या माँ, अब करती क्या हो? कितनी बार कहा है, उठने से पहले सब तैयार करके रखो। बेटा रुक, 2 मिनट में लाती हूँ। काका वो मेरे एडमिशन की बात हुई क्या? अरे भाई इतनी जल्दी क्या है, हो जाएगा। पापा जब एक फोन करेंगे ना तो एडमिशन पक्का। पर भाई सीट कितनी कम होती है, और अगर फुल हो गए तो मैं क्या करूँगा? भाई कुछ भी हो,
तुझे मेरे पापा का रुतबा नहीं पता। एक फोन करेगे ना तो तेरा एडमिशन पक्का। नहीं भाई, मुझे मेरा एडमिशन मेरे रिजल्ट और मेरे आत्मविश्वास से करना है। चल खाने चलते हैं। हेलो मधुकर, हाँ मैं रमणीक लाल बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, नमस्ते नमस्ते। मेरे बेटे को दाखिला दिलवाना है। क्या जगह नहीं है? सीट्स फुल हो गई? मैं कुछ नहीं जानता। मेरा बेटा यानी रमणीक लाल का बेटा, कुछ भी करो और मेरे बेटे को एडमिशन दिलवाओ। मैं कुछ नहीं जानता समझता। तुम्हारे हिस्से के पैसे तुम्हारे घर पे पहुंच जाएंगे। सुनो जी, आपको पता है नरेश रात को जब वापस घर आया था तब वो नशे में था। ये सब ठीक नहीं है, उसे कुछ समझाओ। हिरन को देखो, कितना समझदार लड़का है। अरे तू भी गवार की गवार ही रहेगी। इस जमाने में पीना पिलाना नशा करना ये सब सोसाइटी की आम बात है। मेरा बेटा नरेश लोगों पर राज करने के लिए पैदा हुआ है, ना कि उस गवार हिरेन की तरह। मंत्री जी, कैसे भी करके मेरा काम इस हफ्ते में हो जाना चाहिए। क्या है ना मंत्री जी, ये गुजरात मुझे बहुत पसंद आ गया है और अब मैं अपना बिजनेस यहाँ फैलाना चाहता हूँ। पर पीएम सर। अरे हाँ हो जाएगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, डिपार्टमेंट मेरा ही है। और वैसे ये 5 पूरे हैं ना। क्या है कि ये मेरा लकी नंबर है। रमणीक लाल, इसका काम हो जाएगा ना? मुश्किल है लेकिन हम करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी आती है तो बुरी किसे लगती है। अरे मंत्री, तू इतना कांप क्यों रहा है, जैसे बिजली की खुली तार पकड़ लियो। अरे पीएम सर का फोन है। जरा ऑफिस पहुंचिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सर मैं 1 घंटे में ऑफिस पहुंचता हूँ। 1 घंटे में? 5 मिनट में पहुंचिए। और हाँ, जो आपने वो बैग लिया है ना, वो भी आपके साथ ले आना। अरे सर जी, मैं तो पार्टी के लिए फंड जमा कर रहा था। अच्छा, ये तो कुछ और ही बोल रहे थे। सर, मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ और मैं अगर दोबारा मेरे गुजरात के अंदर आए तो मैं आपको अंदर कर दूंगा। शर्म आनी चाहिए आपको। इतना लंबा पॉलिटिकल करियर, आपका नाम, आपके परिवार की इज्जत, ये मोल है क्या? अरे सर जी, माफी, हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए सर, हमें माफ कर दीजिए। एक मौका दीजिए सर। जिसको ये सब की आदत हो जाए वो कभी नहीं बदलते। मुझे कल सुबह तुम दोनों का इस्तीफा मेरे टेबल पर चाहिए। और हाँ, ये बैग उठाइए, अपने गुजरात के जितने जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार में बांट दीजिए। राम जी, ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। मम्मी, जिस कॉलेज में एडमिशन लेने गया था उसमें एडमिशन मिल भी गया था, पर किसी नेता का फोन आया उसके बेटे के
एडमिशन के लिए। उन्होंने मेरा एडमिशन कैंसिल कर दिया मम्मी, उन्होंने मेरा एडमिशन कैंसिल कर दिया। अब मैं क्या करूँगा? बेटा तू क्यों रो रहा है? मत रो मेरा बच्चा, तू हिम्मत मत हार। देख, अगर तू लोगों की सेवा और उनकी भलाई करना चाहता है तो तेरा लक्ष्य बहुत सच्चा और अच्छा है। तू फिक्र मत कर मेरा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा, तू मत रो। पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह। अब मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, किसी और कॉलेज में एडमिशन लूंगा और मन लगाकर यूपीएससी की पढ़ाई करूंगा और अगर उसमें सफल हो जाऊं तो मैं अपने सारे सपने सच्चे करूंगा। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आनंद है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। हिरेन यूपीएससी में पास हो गया है और पुलिस इंस्पेक्टर बन गया है। नरेश अपने रुतबे के नशे में गलत धंधों और गलत संगत में बढ़ जाता है और नरेश के नाम का वारंट जारी हो जाता है। रमणीक बैंक घोटाले में फंस जाता है तो उसको इस्तीफा देना पड़ता है। हिरेन इंस्पेक्टर बनकर ऑफिस आ जाता है तो सबसे पहला केस नरेश का ही मिलता है, जिसके नाम का वारंट निकल चुका है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अरे हिरेन, बेटा तू इंस्पेक्टर बन गया। बेटा तू बहुत सही टाइम पे आया बेटा। बेटा तेरे भाई को तेरी बहुत जरूरत है। देखो, जिसे तुम गवार गवार कह के चिढ़ाते थे वो आज इंस्पेक्टर बन गया, और अपने बेटे को देखो, उसके हालात देखो, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। अरे बेटा मत कहो मुझे बेटा, पापा मत कहो। अगर मेरी पहली गलती पर आपने मुझे खींच कर एक थप्पड़ मार दिया होता तो आज मैं भी कुछ हिरेन के जैसा बन सकता था पापा, कुछ बन सकता था। अब सब कुछ खत्म हो गया है पापा, सब कुछ खत्म हो गया। नरेश, यू आर अंडर अरेस्ट। मेरे पास तुम्हारे नाम का वारंट है। कांस्टेबल पांडे, अरेस्ट हिम। Yes sir. Well, hold you, the hour is there. लिखनी है किसकी है, fire is there. Oh, what is the name is there? अच्छा, you are the मंत्री का बेटा is there. तो मैं हूं चौकी का अक्षय कुमार is there. ले जाता हूं तुमको चौकी is there. करता हूं तुम्हारी खातिरदारी is there. बेटा इसे छोड़ दे बेटा, ये तेरा छोटा भाई है। नहीं पापा, मैं मजबूर हूँ, ये मेरा कर्तव्य है। मैं अपने काम के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता। मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अपने काम के एकनिष्ठ रहूंगा। पर पापा आप चिंता ना करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इसे कोर्ट में कम से कम सजा मिले। मोटा भाई आप सही थे। मैं ही अपना धन, दौलत, रुतबे और पोजीशन के नशे में सब कुछ भूल गया था। बोया फूल बबूल का तो आम कहां से हो।
आपने सही कहा था मोटा भाई। जैसे कर्म करोगे उसका फल भी वैसा ही मिलेगा। और अब तो सबके कर्मों के फल यहीं पे मिल जाते हैं। देखो देखो मोटा भाई, देखो मुझे मेरे कर्मों के फल मिल गए। बस अब मैंने तय कर लिया है कि मोटा भाई मैं आपके साथ रहकर लोगों की सेवा करूंगा। हम सब साथ में मिलकर गांव में एक साथ रहेंगे। चल भाई, सुबह का बुला शाम को घर आए तो उसे बुला नहीं कहते। और हाँ, जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं ना, तब से गुजरात की काया ही बदल गई है। गांव-गांव में पक्के सड़कें बन गई है, घर घर में बिजली आ गई है। हमारा गुजरात साधारण से डिजिटल गुजरात बन गया है। सुनो सुनो सुनो, इस देश के भाई और बहनें सुनो, आज हम एक खेल दिखाने आए हैं। देश और समाज का चेहरा दिखाने आए हैं। राजनीति हो या एडमिशन, तेरा मेरा इसका उसका, हर किसी का है करप्शन। करप्शन एक ऐसा नाम है जिसने हमारे समाज को खोखला बना दिया है। करप्शन के कारण हर व्यक्ति अपना काम निकालना चाहता है, चाहे वो पैसा लेता हो या काम निकालने के लिए पैसा देता है। करप्शन हाय करप्शन, 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 करप्शन हाय करप्शन। मैं निकला गड्डी लेके सड़क पे एक रुक रुक, हेलमेट नहीं है, ट्रिपल सवारी जा रहे हो, लाइसेंस? East or west, India is the best. 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 पता है, करप्शन की शिकायत करने के लिए तो कई सारी वेबसाइट हैं, पर कार्रवाई करने के लिए भी रिश्वत मांगते हैं। ऑफिस दौड़ी मैं मरी, 2.5 अक्षर जुगाड़ का, पड़े जो सेटल होए। क्या करप्शन लगा रहे हो? इसका कुछ उपाय तो बताओ। अरे वो हमारे टिकट वाका का हुआ? वो क्वालिफिकेशन पूछ रहे हैं। अरे हम 8वां पास है, मर्डरवा का केस है हम पर, इससे ज्यादा और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? भाई मिठाई पूरा गिनकर लाया ना? मेरा काम हो जाना चाहिए। बैग लेकर अभी के अभी मेरे ऑफिस आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुजरात में घुसने की? ये बैग लेकर जाओ और सैनिक भाइयों में बांट दो। ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। 1 2 3 4 मोदी जी की जय जयकार, कौन करेगा इसका उद्धार? 1 2 3 4 मोदी जी की जय जयकार, कौन करेगा इसका उद्धार? कौन करेगा इसका उद्धार? कौन करेगा इसका उद्धार? तोड़ के सारे दरवाजे और छोड़ के सारे काम हम करने आए हैं। युवा हमारा नाम है भैया, युवा हमारा नाम, युवा हमारा नाम है भैया, युवा हमारा नाम, युवा हमारा नाम है भैया, युवा हमारा नाम। भाई 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 भाई, भला मोरी रामा भला तारी रामा, भला मोरी रामा भला तारी रामा, भला मोरी रामा भला तारी रामा, भला मोरी रामा भला तारी रामा। भाई 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 भाई, भाई 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 भाई, ए दुश्मन से भिड़ा टाका। हाँ भाई टाका, ऐसा किया हमने धमाका। हाँ धमाका, के सीधा कर दिया वाका। भाई 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 भाई, भला मोरी रामा भला तारी रामा, भला मोरी रामा भला तारी रामा, भला मोरी रामा भला तारी रामा, भला मोरी रामा भला तारी रामा। भाई 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 भाई,
Balatari Rama, Balamuri Rama, 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 Balatari Rama. Bye bye, bye bye. Balatari Rama, Balamuri Rama, 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 Balatari Rama. ता थैया थैया ता थै ता ता थैया थैया ता थै। इस उत्सव के प्रयोजन का वाचन करते हैं, दिल से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। ऐसे ही बूंद बूंद बनकर खुशियों का सागर बनाते रहे। इसी दुआ के साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं। ए हालो हो सौने राम राम, सौनो खूब खूब आभार। Good evening everyone. To bring the whole event to an end, I, Vivan Javeri, on behalf of PR Khatiwala Vidya Sankul, would like to extend my heartfelt gratitude to our President Shri Arvind Bhai Mehta, Vice President Shri Manhar Bhai Lapsiwala, and all other esteemed managing committee members, and Shri Mukesh Bhai Dalal. We shall ever stay grateful for giving us their precious time. I take this opportunity to thank all for their full-fledged support, cooperation, and surveillance. I can't be completing my job if I don't thank our parents, who gave us their wholehearted cooperation in making this function a success. A big thank you to all our students who did an excellent job. What a performance, what a function, and what an evening. God bless you all. I would like to thank office staff for their undivided help as and when required. I would like to thank all our teaching staff for holding the managing front, kids backstage and in the front. Thank you so much everyone for making this event a grand success with your participation. Thank you and good night.